Good morning, student. I am Miss Seema Patel. Today we'll study about the intrauterine growth retardation or the restriction. Okay. So definition: intrauterine growth restriction is said to be present in those babies whose birth weight is below the 10th percentile of the average weight फॉर दी जेस्टेशनल एज. ठीक है, तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो है हम कौन से बेबीज को बोलेंगे, जिनका बर्थ वेट, ठीक है, बर्थ के टाइम पे वेट कितना हो अकॉर्डिंग टू दी जेस्टेशनल एज जितना होना चाहिए. ठीक है, एवरेज वेट जितना होना चाहिए एज पर दी जेस्टेशनल एज, अगर उससे 10% बिलो है तो ऐसे बेबीज को हम बोलेंगे इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड बेबी. देन इट कैन अकर इन प्री टर्म, टर्म और दी पोस्ट टर्म बेबीज. ठीक है, ये तीनों बेबीज में हो सकते हैं. आइदर द बेबी विल प्री टर्म और दी टर्म और दी पोस्ट टर्म बेबीज. द नेक्स्ट इज इंसिडेंस of IUGR. First is dysmaturity comprises about 1/3 of the low birth weight babies. ठीक है, dysmaturity के means immature baby, ठीक है, जिनमें रहते हैं 1/3 of LBW बेबीज में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब लो बर्थ वेट बेबीज में रहते हैं. एंड इन डेवलप्ड कंट्रीज इट्स ओवरऑल इंसिडेंस इज अबाउट 3 to 10%. ठीक है, ओवरऑल कंट्रीज में अगर हम देखें इंसिडेंस रेट तो इसका 3 to 10% होगा. एंड टर्म बेबीज, ठीक है, जो कि 37 वीक ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट कर लिया है, उनमें 5% होता है चांसेस है. एंड पोस्ट टर्म बेबीज में 15% चांसेस रहता है IUGR होने का. द नेक्स्ट इज नॉर्मल फीटल ग्रोथ. How the normal fetal growth occurs in baby? So first is cellular hyperplasia up to the 16 week. Means when the baby is start to growing or when organogenesis process is started, that time up to 16 week, what happens? Cellular hyperplasia. Cellular hyperplasia, that means the increase in number of the cells that is present up to the 16th week. And hyperplasia and hypertrophy, that is 16 to 32 weeks. After the completion of hyperplasia, hyperplasia means increase in number of cells, and hypertrophy, that means the increase in size of the cells. That both process are present between the 16 to 32 weeks of gestation. And hypertrophy, after that what happen? Only the size of increase in size of the cells is present. That is after the 32 week of gestation. Okay. Then most of the fetal weight gain 2/3 occur beyond 24th week of pregnancy. ठीक है, जब बेबी जो है 24th week ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचता है तो उस टाइम पे वेट गेन होता है उसका 2/3 जो है वेट गेन ड्यूरिंग दिस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ही कंप्लीट होता है. सो दिस ऑल आर दी नॉर्मल फीटल ग्रोथ. Then we'll see the types of the intrauterine growth restriction or the retardation. So based on clinical evaluation and the ultrasonography examination, first is fetuses, those are small and the healthy. So the birth weight is less than 10th percentile for the gestational age. ठीक है, तो ऐसे फीटस जो कि स्मॉल या फिर स्मॉल एंड हेल्दी रहते हैं, तो जिनका वेट क्या रहेगा 10 परसेंटाइल रहेगा अकॉर्डिंग टू दी जेस्टेशनल एज. And they have the normal ponderal index, normal subcutaneous fat, and they usually have uneventful neonatal course. ठीक है, तो ऐसे बेबीज जो स्मॉल एंड हेल्दी रहते हैं बट उनका सिर्फ वेट क्या रहता है अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज, वो 10 परसेंटाइल लेस रहेगा. तो ऐसे बेबीज में नॉर्मल पॉन्ड्रल इंडेक्स रहता है. पॉन्ड्रल इंडेक्स, दैट इज द वन काइंड ऑफ फॉर्मूला विच वी कैन यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ द IUGR बेबी. And the formula is birth weight upon the crown heel length cube. ठीक है, so if we'll solve the ponderal index, if it is come normal, then the baby is in normal condition. Okay, so ऐसे बेबीज में ponderal index नॉर्मल रहेगा और साथ ही सबकुटेनियस फैट भी नॉर्मल रहेगा. एंड यूजुअली हैव द अनइवेंटफुल न्यूनेटल कोर्स. ठीक है, ऐसे बेबीज में अनइम्पॉर्टेंट न्यूनेटल कोर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो ये क्या है, फीटस दोज आर स्मॉल एंड हेल्दी. The next is fetuses where the growth is restricted by pathological process. ठीक है, कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जिनमें जो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड होता है, बाय दी पैथोलॉजिकल और दी डिसीज कंडीशन प्रोसेस. एंड डिपेंडिंग ऑन दी रिलेटिव साइज ऑफ देयर हेड, एब्डोमेन एंड द फीमर, दे आर सबस डिवाइडेड इनटू. ठीक है, अब क्या करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्या था, स्मॉल एंड हेल्दी बेबी था. सिर्फ इसमें क्या था फर्स्ट वाले में कि उसका जो वेट है, ठीक है, दैट इज
less than 10 percentile for the gestational age, and second one because of the pathological process the IUGR is present in baby. But now according to the relative size of the baby's head, abdomen and the femur, we are dividing the condition or the types. First one is the symmetrical or type 1 and the asymmetrical or type 2. So first we will see the symmetrical, that is present in 20% babies, and first one affected from noxious effect very early in the phase of the cellular hyperplasia. मीन्स जब बेबी में सेलुलर हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है, सेलुलर हाइपरप्लेजिया मीन्स व्हेन द इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, जब ये प्रेजेंट रहता है तो उस टाइम पे अगर कुछ नॉक्सियस इफेक्ट हुआ, नॉक्सियस इफेक्ट दैट मीन्स दी हार्मफुल इफेक्ट अगर होता है उस टाइम पे, जब बेबी का जो सेल्स है, ठीक है, वो नंबर में इंक्रीज होता है, तो उस टाइम पे चांसेस होता है सिमेट्रिकल IUGR होने का. देन द टोटल सेल नंबर इज लेस, ठीक है. In that condition, we have seen that cellular hyperplasia is present. So, because of the noxious effect, the total cell number will be less and most often caused by the structural or the chromosomal abnormalities or congenital infection like the TORCH. ठीक है, अगर किसी टाइप का इन्फेक्शन है, टॉर्च इन्फेक्शन है या कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या कंजेनाइटल इन्फेक्शन है, so that condition also cause the symmetrical IUGR. Then pathological process is intrinsic to fetus and involves all the organ including the head. ठीक है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस या डिजीज प्रोसेस जो रहता है वो इंट्रिंसिक होता है फीटस में, मतलब फीटस के इंटरनल प्रोसेस या इंटरनल इन्वायरमेंट को ही वो अफेक्ट करेगा. और वो किसको इन्वॉल्व करेगा? ऑल दी ऑर्गन्स, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं इंक्लूडिंग दी हेड, ये सारे पार्ट्स को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा. सो दैट इज नोन एज द सिमेट्रिकल IUGR विच इज प्रेजेंट इन 20% ऑफ द बेबी. द नेक्स्ट इज asymmetrical, that is present in 80% baby. First one affected in later months during the cellular hypertrophy. ठीक है, तो जो एसिमेट्रिकल IUGR है वो कब प्रेजेंट रहता है? ड्यूरिंग दी सेलुलर हाइपरट्रॉफी, मतलब जितने भी सेल्स हैं फीटस के वो साइज में इंक्रीज होते हैं, उस टाइम पे ये अफेक्ट करता है. एंड टोटल सेल नंबर रिमेन सेम बट साइज इज स्मॉलर. इसमें क्या रहेगा कि बेबीज में जितने भी सेल्स के नंबर हैं वो एज इट इज रहेंगे, सेम नंबर में रहेंगे, बट उनका साइज क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा. एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस इज ऑफन मैटरनल डिसीज एक्सट्रिंसिक टू फीटस. और इसमें जो एसिमेट्रिकल IUGR का जो रीजन है वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू दी पैथोलॉजिकल प्रोसेस और ड्यू टू दी डिसीज कंडीशन. ऑफन मैटरनल डिसीज, वो मैटरनल डिसीज से भी रिलेटेड हो सकता है, इसलिए इसमें क्या रहता है? एक्सट्रिंसिक टू फीटस. In previously we have seen in symmetrical in that the disease or the pathological process is intrinsic, but in the asymmetrical it will be extrinsic to the fetus because it is also affected or caused due to the maternal disease. And diseases alter the fetal size by reducing the uteroplacental flow or by restricting the oxygen and nutrients transfer or by reducing placental size. ठीक है, अब जो भी डिसीज हुआ है बेबी को या फीटल को, तो उससे उसका साइज तो रिड्यूस होगा. ठीक है, वो रिड्यूस क्यों हो रहा है? ड्यू टू दी इम्प्रॉपर यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई नहीं हो रहा है बाय द प्लेसेंटा टू द बेबी. ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग प्लेसेंटल साइज. इससे क्या हो रहा है कि यूट्रस से प्रॉपर प्लेसेंटा को सप्लाई नहीं हो रहा है, तो प्लेसेंटा का साइज भी रिड्यूस हो जाएगा और साथ ही प्लेसेंटा से बेबी को भी प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है सप्लाई नहीं हो पाएगा. देन प्रिफरेंशियल संटिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ब्रेन. Preferential shunting, that means the distinctive pattern of left to right shunting of pulmonary venous return. ठीक है, if this kind of shunting is present of the oxygen or the nutrients to the brain, so it will also lead to the asymmetrical condition or asymmetrical IUGR. Then we'll see the difference between the symmetrical or the asymmetrical. So by the difference you can able to understand the difference between the symmetrical and asymmetrical. So we'll see in the symmetrical uniformly small, in that the baby size will be small. Okay, baby will be healthy and small. And in the asymmetrical what happen, the head is larger than the abdomen, means baby का head जो है large रहेगा as compared to the abdomen. And then second difference is pondal index or the that is birth weight upon crown heel length cube, that is normal in symmetrical babies. As I
previously told you, and in the asymmetrical the ponderal index will be low. And then head circumference or the abdomen circumference ratio and the femur length and the abdomen circumference ratio that is normal in symmetrical case, and in the asymmetrical that is elevated. And etiology for the symmetrical is due to the genetic diseases or the infection that will be intrinsic to the fetus, and asymmetrical that is chronic placental insufficiency, or we can call it as a deficiency of or the uteroplacental insufficiency or the maternal disease. So it is the extrinsic to the fetus. And in the symmetrical, total cell number will be less or cell size is normal, but in asymmetrical the total cell number is normal, only the size of the cell is smaller. And in the symmetrical, neonatal course is complicated with poor prognosis. Okay, means symmetrical condition is more complicated, and the prognosis to be treated or well condition of the baby is very less or poor. And in asymmetrical baby or IUGR baby, usually uncomplicated, having the good prognosis, means the baby will if we'll treat properly the condition of the babies, then the prognosis will get the good. So this all are the difference between or the comparison between the symmetrical or asymmetrical IUGR. Then next we will see the etiology of the intrauterine growth retardation. So first one is the maternal. In the maternal, first is constitutional. Constitutional, that means the relating to the physical condition. So if the small women or maternal genetic or the racial background, okay, such kind of etiology is present, like if the size of the women is small or short stature women, and maternal mother having any kind of genetic disorder or racial background, okay, if it is Mongolian, okay, so that all affects the condition or cause the IUGR, and not at increased risk. And pre-pregnancy weight less than 100 pounds, that increase the twofold risk. If the weight of the women before the pregnancy time, if it is less than 100 pounds, so it will increase the 2 times, it will cause the IUGR condition, means more chances that the baby having the IUGR condition. And reduced intrauterine growth of the mother is a risk factor. Okay, so this all are, comes under the constitutional. Then second is maternal nutrition. Before and during the pregnancy, glucose, amino acids and oxygens are deficient during the pregnancy. If the woman is not taking proper nutrition, means if the glucose, amino acid and oxygens are deficient during the pregnancy time, so it will affect the baby's condition and lead to the IUGR condition. The next is social deprivation. Effects of associated lifestyle factors such as smoking, alcohol or other substance abuse and the poor nutrition. Means if the woman is taking during the pregnancy time smoking, alcohol or other kind of substance abuse, or the poor nutrition, or if the mother is underweight, okay, so that will lead to the IUGR condition in baby. The next is maternal diseases like the anemia, sickle cell diseases, hereditary anemias, hypertension, thrombotic diseases, heart diseases, chronic renal disease and the collagen vascular disease. So if the woman is suffering from such kind of disease, so that will lead to the IUGR condition because of the lack of oxygen and the blood supply to the fetus. Then toxins like the alcohol, smoking, cocaine, heroin or the drugs. If the woman is taking such kind of or doing the such kind of substance abuse, so these all are the teratogenic substance which are affecting or causing the congenital malformation in the baby. So that is also important etiology of the IUGR. And then antiphospholipid antibody syndrome, anticardiolipin antibody and lupus anticoagulant or maternal platelet aggregation and placental thrombosis. So this condition or this antiphospholipid antibody syndrome that will lead to the platelet aggregation or the placental thrombosis. So this all condition will affect or obstruct the proper blood supply to the fetus and lead to the IUGR condition. And the extrauterine pregnancy. If the pregnancy is extrauterine or the ectopic pregnancy, means out of the uterine cavity, so that will also lead to the condition of IUGR because the proper oxygen and blood supply from the placenta will not be possible.
The next is the fetal causes, substrate not utilized by fetus. Okay, means the substance not utilized by the fetus. First one is the structural anomalies like the cardiovascular or the renal. Means if in the fetus any kind of cardiovascular or the renal or the any kind of structural abnormality is present, so it will interfere with the proper growth or the development of the fetus body or cell or the tissues. The next is chromosomal abnormality like 8 to 12% growth retarded infants and triploidy, aneuploidy, trisomy 13 that means the Patau syndrome, trisomy 18 that means Edwards syndrome, trisomy 21 that means Down syndrome and Turner syndrome. So if the baby is suffering with that kind of chromosomal abnormality, so baby will get the chance of IUGR condition. And disorders of bone and the cartilage like the osteogenesis imperfecta, that is the inherited disorder caused by the defective genes, and that will lead to the fragility of the bones of the baby. And cause chondrodystrophies, that is the maldevelopment of the cartilage, that is also because of the genetic abnormality. So these all are the fetal factor. And third one is the infection like the torch and malaria, and then cytomegaloviral infection, rubella infection, hepatitis A and B. And the paradoxically with syphilis and placenta is almost always increased in weight and size due to the edema and the perivascular inflammation. So if any kind of infection is present in the fetus, so that will lead to the IUGR condition, because any kind of infection like the hepatitis, cytomegalovirus or the rubella, so that that kind of virus can affect the growth and development of the baby. The next is multiple pregnancy, mechanical hindrance to growth and the excessive fetal demand. ठीक है, mechanical hindrance that means the obstruction. So if any kind of mechanical hindrance or the obstruction is present, because in the multiple pregnancy more than 1 or 2 babies are present inside the uterine cavity, so that will affect the growth of the next baby. Okay, so it will be more chances to be birth of the baby of IUGR. Okay, because in that condition the growth and excessive fetal demand is increases. And then next is chronic hypoxia, high altitude maternal cyanotic heart disease. The women who are living at the high altitude area, or if the mother having the maternal cyanotic heart disease, so that condition also cause the IUGR in babies. Then third is the placental causes, in that poor uterine blood flow to placenta site for a long time. Okay, अगर long time तक जो है poor मतलब uterus से poor supply होगा blood का to the placenta, so it can't be possible to proper supply the oxygen and nutrients to the baby also. So that is one kind of major reason, and this leads to chronic placental insufficiency with inadequate substrate transfer. Okay, so due to the poor uterine blood flow, the chronic placental insufficiency will be present, and with that the inadequate substrate or the substance transfer to the baby, and that condition will lead to the IUGR. And placenta previa, in that condition the placenta will be implanted in the lower uterine segment. Then abruption of placenta means premature separation of the placenta. And circumvallent placenta, in that condition what happen, the amnion, chorion or the fetal membranes are fold back upward around the edge of the placenta, so that condition lead to the IUGR. And the mosaicism is one kind of condition in which the cell is composed of 2 genetically different chromosomes, means in the one cell 2 different chromosomes will be present. So if such kind of disease condition is present into the placenta, so that will lead to the IUGR in the baby. Then last one is the unknown, means 40% of cases are unknown of the IUGR, means why the IUGR condition is happening in the baby, that is unknown. The next is the pathophysiology. The pathophysiology behind the IUGR is reduced availability of the nutrients in mother. If the mother is not taking proper nutrients during the pregnancy time, so it will lead to the reduced transfer by placenta to fetus. Okay, so transfer from the uterus to placenta
and placenta to baby, that will also be reduced, and reduced utilization by the fetus. अगर लैक ऑफ सप्लाई रहेगा फ्रॉम द प्लेसेंटा टू फीटस तो फीटस भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा जो भी मटेरियल होगा, जिससे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. एंड देन ब्रेन साइज एसिमेट्रिक एज वेल एज द सेल नंबर सिमेट्रिक आर रिड्यूस्ड, एंड इन दैट कंडीशन brain size of the baby as well as the cell number will be reduced and the liver glycogen content is reduced. अगर लैक ऑफ सप्लाई रहेगा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और ब्लड का, तो जो भी लीवर ग्लाइकोजन कंटेंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा बेबी में और फीटस में. और रीनल एंड पल्मोनरी कंट्रीब्यूशन टू एमनियोटिक फ्लूइड आर डिमिनिश्ड ड्यू टू द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो. ठीक है, और जो रीनल मतलब जो किडनी है और पल्मोनरी मतलब लंग्स जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, तो वो भी डिमिनिश्ड हो जाएगा. तो इस कंडीशन में कौन सा कंडीशन डेवलप होगा, ओलिगोहाइड्रोमिनास. ठीक है, क्योंकि इस इन द प्रीवियसली सेशन इन द ओलिगोहाइड्रोमिनास वी हैव सीन दैट फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द generation or production of the amniotic fluid the renal and pulmonary are giving proper contribution, क्योंकि lungs से जो secretion होता है and from the kidney से जो secretions out होता है तो ये जो है amniotic fluid के level को increase करते हैं. बट यहाँ पे due to the lack of supply तो क्या हो जाएगा, वहाँ का amniotic fluid का level भी obstruct हो जाएगा या कम formation होगा, जिससे ओलिगोहाइड्रोमिनास का कंडीशन जनरेट होगा. एंड रिस्क ऑफ इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस एंड डेथ इफ सीवियर. तो इस कंडीशन में जो है इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड एसिडोसिस. ठीक है, ये सारे कंडीशन डेवलप होंगे. अगर इसको प्रॉपरली हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं सो दैट कंडीशन विल लीड टू द डेथ ऑफ द फीटस. सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट. मतलब अगर मदर जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेगी, ठीक है, जिससे यूट्रस से प्लेसेंटा को सप्लाई होगा एंड प्लेसेंटा टू बेबी, तो अगर ये मेंटेन रहेगा तो IUGR कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन द बेबी विल बी डेवलप एज अ IUGR.